हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह, मुझे लग रहा था आज बेस्ट साइज बहुत छोटा होने वाला है, बट समहाउ इट इज गुड। 120 121 लोग हैं यहाँ पे। नॉट बैड, गुड गुड गुड। ओके ग्रेट। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल वीडियो। आई थिंक समटाइम वी मिस पावर ऑफ डूइंग स्मॉल स्मॉल थिंग। ये एक बहुत छोटा सा वीडियो है। विल गो थ्रू दिस एंड देन विल गो टू द टॉपिक फॉर द डे, बट लेट्स फर्स्ट see this video. If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week. It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and 1 special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down to the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive this freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then
one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became two, and two became three, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted. And somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. This is one great video which I always see when I need motivation. It talks about taking a small step, fulfilling one small task daily. Life will always be unfair with you. If you are crying over something कि यार life मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता, I think those people never achieve anything. Anything starts with you. If you are disciplined enough, people around you will become disciplined. But first of all, you need to do what you want to do. And it is not required कि आपको बहुत बड़ी-बड़ी चीजें करनी है. मैं हमेशा बोलता हूँ, एक इमारत बनानी है, जितनी बड़ी इमारत बनानी है, उतने छोटे-छोटे ब्रिक्स चाहिए. एक बड़ी चट्टान एक बड़ी इमारत नहीं बना सकती है. So I think with this, we'll start our day. Okay, so on day 2, we are going to talk about segment-wise prospecting. Again, prospecting is one very small subject, but has a very big impact. As I told you yesterday, you need to have your goal set. Like when you write your goal, now you know where you are heading. Now, prospecting is something, again, it is writing on piece of paper. You need to write names of people whom you want to visit. I tell you, when I was in SDFC, हमें बोला जाता था कि हम उसको बोलते थे prospect 100 list. जिन लोगों ने इंश्योरेंस में काम किया होगा उनको पता होगा, ये बहुत बेसिक सी प्रैक्टिस है. आप जैसे ही ज्वाइन करोगे वो बोलेंगे आप prospect 100 लिस्ट बनाओ. और हमें बहुत गुस्सा आता था कि यार क्या है 100 लोगों का लिस्ट जब देखो बोल देते हैं बनाने के लिए. But that makes you synchronize with what you want. So आज हम भी बात करेंगे कि what should be in our prospect list when we are going out. Don't just randomly wake up every day and just okay आज चलो इनसे मिल लेते हैं. No. Properly, when you will have a list. Look, when I travel, I always have my list कि मैं अगर इस लीडर से मिल रहा हूँ तो इनका ये स्ट्रेंथ है, इनका ये वीकनेस है, इनके लोगों का ये स्ट्रेंथ है, इनके लोगों का ये वीकनेस है. I always filter that. If I will not have that idea कि मैं किस लीडर से मिल रहा हूँ, वो किस लेवल का है, उनके लोग किस लेवल के हैं, I will not be able to do justice to every different state that I visit. So I also do my prospective when I write down things. Yesterday only I have given you my travel plan. If I'm not going to plan according to write it down, I think I'll not be able to do justice to the entire travel thing.
Because suddenly in early in the morning I cannot wake up and call Mr. Chetri, okay Mr. Chetri, I am coming to your state. Chetri साहब बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहा है. You also need time to prepare thing. I cannot talk to anyone suddenly and tell okay no, I am coming. No. Just like that, you also need a prospecting list where you first of all put filters. And who can be your prospect? As I told you yesterday also, it is really important for all of us to know who is the right candidate for our business. If someone is a real big businessman, he might be investing in UPOS, but he'll not be operating in UPOS. And our UPOS strength lies, first of all, let me tell you, we are the same strength which was yesterday. 178 people are sitting there. So I'm really happy that all of you are there, but I'm not happy that we don't do exercises. Yesterday I asked you to do goal sheet, but no, I think only 4 or 5 of you have sent your goal sheet. Don't take this session as a motivational session. Motivational session क्या होता है? वो मूवी की तरह लोग देखते हैं, वाव बोलते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर अभी सब जाके कंबल में सो जाएंगे. So don't do that. I was not expecting this number today, but somehow 180 is the number right now. But please practice what I am teaching, because until you don't practice, it makes no sense of doing all these things, right? So whatever I am saying, it is for your betterment. It is out of my experience, how I have built this organization. I think all those small steps I'm teaching you. You might feel कि यार ये तो हमें पता सबको सब कुछ है, but somehow we are not practicing. So I'm just giving you a revision and hoping that you start practicing, right? So let's start with the prospecting list. Let's see how we should do the prospecting. There are basically 3 categories of prospecting that we should do as a GGN. One is the vendor, whom we want to onboard on our company's vendor list. Second is the customer, and third one is our key partners, right? If I am a VP, I need to recruit AVPs. If I am an MCP, I need to recruit CPs. If I am a CP, I need to recruit ACPs. If I am an ACP, I need to recruit partners. If I am BDO, I need to recruit partners. So very clearly, we should define who is what for us. It should not be like कि मैं किसी वेंडर के पास गया, बातों में मैंने सोचा चलो मैं इसको वेंडर भी बता देता हूं, मैं इसको अपना पार्टनर भी बना लेता हूं, फिर इसको एंड में यूजर तो बना ही लूंगा. We should be very crystal clear कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं, हम उससे क्या बात करना चाहते हैं, द मेन पर्पस क्या है. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप किसी को पार्टनरशिप ऑफर करने जा रहे हैं तो वो आपका कंज्यूमर तो बन ही जाएगा, और अगर वो कोई प्रोडक्ट बेचता है तो वो वेंडर भी बन जाएगा. बट आपका एम शुड बी to make him a partner. If you have gone there to make him a vendor, talk only focused. अभी हम क्या करते हैं, हम पूरा वाव जो हमारा 1-1.5 घंटे का वाव है वो हम सेशन पूरा कर देते हैं हर किसी के लिए. लेट्स बी वेरी क्लियर कि हम किसी से क्या आउटपुट चाहते हैं, क्या रिलेशनशिप चाहते हैं. डू नॉट पुश योरसेल्फ ऑन एनीबॉडी फॉर एवरीथिंग. इससे सामने वाला, हम अक्सर लोग मुझे बोलते हैं सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने लोगों को वाव बता रहे हैं, इतने लोगों को बिजनेस कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बट लोगों को पता नहीं, सब कुछ होने के बाद भी समझ में नहीं आता है. वो हाँ बोलते हैं और फिर बाद में होता नहीं है, बिकॉज दे गेट कंफ्यूज्ड. वो शुरू कहां से करें? सो फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर कि आपको उनसे क्या चाहिए. इफ यू आर नॉट क्लियर कि आपको उनसे क्या चाहिए, जैसे आप कंफ्यूज हो वैसे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं. You are multiplying your confusion. So here you have to put those filters. Ki yes, this is my vendor, this is my partner, this is my customer. पहला relationship establish कर लीजिए. Once you establish the first relationship, then you can talk about other relationship that you want to have. But first thing first, that what category of prospecting you are doing, right? Now, when we are doing this prospecting, we should know that we are a hardcore sales company and we as an individual are a salesman. We build and we empower. Our attitude should be like this only. कई बार क्या होता है, हम बड़े रिक्वेस्टिंग मोड में जाते हैं. जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, who are you? You are king of global garner. Why? Because you are hub of empowerment.
आप वेंडर को एम्पावर कर रहे हो, आप एक मिडिल मैन को एम्पावर कर रहे हो, आप एक यूजर की अर्निंग बढ़ा रहे हो, एंड स्टिल हम मांगने वाले एटीट्यूड से किसी के पास जाते हैं. It should not be the case. And you should give every proposal as proposal. Do not beg in front of anyone. Right? Why? Because you have to first offer. If that offer is not accepted by someone, please go to another. Create another opportunity. Because you are here to give something. When some of my team members, like in this video also it was told, no, he started a batch of 150 people, and in the during the process only 42 left. Same will happen with you. You will start with 100 people, and in the end 10 people will listen to you, and finally one guy will come with you. Don't get disheartened कि अब आप उसके पीछे लगे पड़े हो, नहीं कैसे नहीं समझेगा, रुको मैं इसको समझा के रहूंगा. You are wasting your own time and you are wasting your own dignity also. आप अपनी dignity को नीचे ला रहे हो. Why? उसको लगेगा कि यार ये तो चेपू है, ये पता नहीं क्यों पीछे पड़ा है. You might be having the best product, but if the prospecting is not done right, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, मैं मेरी काम वाली बाई को बोलूंगा मर्सिडीज जो 1 करोड़ रुपए का आता है, मैं तुमको 10 लाख रुपए में दिला दूंगा. क्या वो लेगी कभी? ऑफ कोर्स नहीं लेगी, क्योंकि उसको उसका वैल्यू ही नहीं है. वी नीड टू नो हु विल वैल्यू दिस प्रोजेक्ट, हु विल वैल्यू ग्लोबल गार्नर, किसकी लाइफ में ये चेंजेस ला सकता है. यही काम है जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं. दैट थॉट प्रोसेस शुड गो इन आवर हेड व्हाइल डूइंग द प्रोस्पेक्टिंग. इससे आपका काम 10% एटलीस्ट कम हो जाता है. एटलीस्ट आपकी मेहनत बहुत रिड्यूस हो जाएगी when you are doing a right kind of prospecting and right kind of attitude. When you are presenting this, you have to present this as an offer. You check it with anyone. I have never begged to anyone to join my company. I have always offered that this is what I'm going to do and I will do my part. After some time or the other, people will join you. They might not like your concept or whatever, but they will like your passion if there is a passion in you. And I've seen that. It's been almost 7-8 years journey now, officially. And I've seen people who have rejected me in starting are now more than interested in joining Global Garner. Initially, who were not able to understand Global Garner, today they are willing to understand, they are willing to invest time, they are willing to invest in offices, they are willing to do anything. But our attitude from day one should be of a giver. आप किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं. You are a part of a company which is there to empower people. Right? So now let's see from where we can search our vendors, UPOs, and partners. It is a very simple logic. This is how I started. Whatever I am talking, it is purely from my own experience. You all would have seen these categories. All these 3 category people are available here. Sirf you have to explore your own territory. What you need to explore is, you have to just go on Just Dial. If you want to look for vendors, UPOs, and partners, go to India Mart, go to Alibaba, go to newspaper ads, go to listen to radio, watch TV, hoardings. People who are advertising as a vendor surely need new business. People who are there on India Mart, Just Dial, they need distributors. Right or wrong? Just think of it. They are paying money to be to get कि public उनको देखे. Whereas you are a only platform in this world which says you pay after getting sales.
all you need to do is just go there, talk to them कि सर आपने जस्ट डायल पे अपना एडवर्टाइजमेंट किया है, वो थम्स अप लिया है, दैट मींस यू हैव पेड समथिंग टू जस्ट डायल. आप जस्ट डायल पे जैसे ही जाओगे, लोग मुझे बोलते हैं अक्सर सर हम वेंडर कैसे ढूंढे, हम इनको कैसे ढूंढे, हम उनको कैसे ढूंढे. जस्ट गो ऑन दीज वेबसाइट्स, देयर आर मार्किंग्स, जिसके ऊपर भी वो थम्स अप होगा, दैट मींस व्हाट, they have paid something extra in advance to get that thumbs up. If that guy has invested in getting listed, he will be more than interested in getting listed on Global Garner at free of cost. And from these vendors only you will get your UPOS prospects also. From these vendors only you will get partners. Let's say somebody has advertised for his insurance policy, or he is a distributor of anything. Now you know that he is already into the business of distribution. You can offer him a partnership. You can offer him ki, okay, you become a partner, you become a channel partner, you become a BDO, you become a AVP or whatever. These are very simple. Today we live in a world where information is easily available, and we are not utilizing that power. Let's utilize this, all these forums, ready-made platforms. हमें कुछ करना नहीं है. मुझे आज भी याद है, हम लोग जब इंश्योरेंस बेचते थे तब इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो हम लोग अपनी लिस्ट खुद जनरेट करते थे. हमें बोला जाता था आप जिसको पॉलिसी बेचो उससे 5 और रेफरल ले लो. कि सर अगर आपको हमारी स्क्रिप्ट थी कि जैसे ही आप एक पॉलिसी क्लोज करो, उसके बाद लोगों से बोलो कि सर आपको मेरी सर्विस अच्छी लगी, आपने मुझसे पॉलिसी लिया, क्या आप मुझे 5 और रेफरल दे सकते हैं. वी यूज्ड टू डू इट लाइक दिस. दैट इज आल्सो वन गुड स्टेप. लेट्स से यू हैव सोल्ड वन UPOS टू समवन, आस्क हिम कि सर कैन यू गिव 5 रेफरल्स टू मी, इफ यू लाइक्ड माय प्रोडक्ट कैन यू गिव मी 5 रेफरल्स. बिकॉज योर सक्सेसफुल सेल्स is the person who is your best brand ambassador. Because now when people will cross check with him, he will always talk good about you. Why? Because he himself has been convinced. This multiplies your business. In insurance, it is best practice. We used to take referrals. When I started my career in insurance, it was simple practice. Whenever I used to sell a policy, I used to take few referrals. कि अंकल प्लीज मुझे, बिकॉज एट दैट टाइम माय एज वाज वेरी लेस, सो मैं हर किसी को अंकल आंटी बना लेता था. इनफैक्ट मेरे ऑफिस में लोग बोलते थे यार इसके तो सब रिश्तेदार हैं. ट्राई टू यूज ऑल दीज टूल्स. These are very easily available, and when you are talking to them, just understand what problems they have. Let's say you are talking to a let's say electronic store owner. You know his biggest problem is online, guys. His biggest problem is Reliance. His biggest problem is Chroma, who are giving better offer than him. Then you can talk about his problem and then the solution. But as of now, just focus on doing prospecting. Create your prospect 100 list. If you want to recruit, just create a list of whom you want to talk to. इस तरह के लोगों को मिलिए जाके, जिन्होंने अगर शहर में होर्डिंग्स लगा रखी हैं, that means they need new business. And for that business, they are just doing वो अंधेरे में तीर मारने वाला काम. You can go and tell them कि sir, I will give you a sure shot sales. And when I give you sales, then only you need to pay me. Else you need not to pay me. कौन आदमी मना करेगा इस डील को, राइट? जैसा मैंने बोला आपको कि you have to understand your vendor and market. What are the hurdles that we are seeing that they face? तो ये 2 एड्स हैं मैं रन करने जा रहा हूं. Just listen to them. In 30 seconds, how they are identifying the problem of that guy and proposing a solution. That 30 seconds. हमारी तरह नहीं कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा लगे पड़े हैं पूरा उसको वाव समझा रहे हैं. No. When we have a specific task, let's be very specific. If we are there to recruit a vendor, just talk about vendor model only.
If we are there to recruit a user, let's talk about our cashbacks only. It is only when we are recruiting our leadership team, we should talk everything. But when we are only focusing on vendors or users, please do not give them full wow. It is my humble submission to all of you. Please do not do your full wow to your vendors and users. Vendors only need their segment and users need only their segment. Only leadership requires the entire wow thing. Right? So let's listen to this ads and then understand. And look, ads will teach lot of thing to you. जब आप अगर देखना चाहते हो तो YouTube पे बैठ के कई ads देख लो. These people who create these ads are really creative people. They know how to hit a person's thought process in just 10 seconds, 30 seconds, 40 seconds, because they do not get more time than this. Just listen to these ads and then we'll talk about it. अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी. कौन? अरे भाई आप. अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई. आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है. आप बड़ी दुकान ले लो. अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन. अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे. पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे. इसको लगाओ, धंधा बढ़ाओ. पे भारत पे. नाउ सी, कितने सिंपली आपने सामने वाले से उसकी प्रॉब्लम निकलवाई. अभी हम क्या करते हैं, व्हेन वी गो टू अ वेंडर टू प्रपोज हिम अ वेंडरशिप, वी स्ट्रेट फॉरवर्ड से, सर हम आपके कस्टमर को 100% कैशबैक दे देंगे. अब गई भैंस पानी में, क्योंकि अब ये 100% कैशबैक समझाने में हमें तीर निकल जाता है. ना वो समझेगा ना वो बुझेगा, और हमें लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस गधे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है. आप समझिएगा, जो चीज समझने में आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगा है, यू वांट समवन टू अंडरस्टैंड दैट इन 1 मिनट. या तो आप सामने वाले को ओवर कहते हैं ना स्मार्ट समझ रहे हैं, या अपने आप को अंडर स्मार्ट समझ रहे हैं. क्योंकि जो चीज आपको समझने में 2 महीना लगा है, वो सामने वाले को भी समझने में 2 महीना लगेगा. बट देन These are the pointers. उसने छूटते ही बोला कि यार अपनी दुकान में तुम कितना माल भरोगे, तो उसने खुद ही बोला कि यार मेरी दुकान में नया स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा ना कस्टमर के लिए. सेकंड, तो अगर इतना ही स्टॉक रखना है तो बड़ी दुकान ले लो. तो उसने खुद ही अपनी प्रॉब्लम बोली, भैया हमको कौन दुकान के लिए लोन देगा. एंड देयर ही पिच्ड हिज प्रोडक्ट. सेम वे यू शुड नो हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट थ्रू हिज टॉक्स. सेल्समैन का काम बोलने का नहीं है. मैं हमेशा बोलता हूं, आई ऑलवेज हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन पीपल से कि सेल्समैन का काम बोलने का है. नो, सेल्समैन का काम सुनने का है. बिकॉज योर कस्टमर विल हिंट व्हाट ही वांट्स ड्यूरिंग हिज कन्वर्सेशन. ये तो हम क्या है, हम सोच के जाते हैं कि हम ये बोल देंगे, इसलिए जनरली हम पिच नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हम अब उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं. But if we listen to our prospect, he will tell what he wants. Please understand this. You have to listen to your prospects. The better you listen, the better proposal you will be able to give. And then detailing can happen afterwards. But initially you have to generate the interest of the person. If you are not able to generate the interest, rest whatever you say, it is just going over his head. आप पूरी मेहनत करोगे, आप 2 घंटा उसको समझाओगे, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा. Just give him some pointers. If he seems to be interested, talk to him to the next level. Right? ये दूसरा ऐड भी देखते हैं. हमेशा एक के साथ एक फ्री. किसको मिला? कस्टमर. तुझे क्या मिला? गंदा. तुझे की साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर. टोली. चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर. तुझे क्या मिला? ओहो गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग.
और अब मिलेगा आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फीस, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। पे भारत पे। अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं। ब्रो, उससे भी बेटर आइडिया दूं? अपना नहीं, सबका बिजनेस करते हैं ना, यू पोस्ट पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यू पोस्ट से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक या उनकी हर 10,000 रूपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www.globalgarner.com और कॉल 875-611-2227 और 63523-05842। यू पोस्ट बाय ग्लोबल गार्नर। यू पोस्ट, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। अब देखिए, ये पंच लाइनर्स अगर किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस and he doesn't has an acumen to understand your business. Please understand this also. Not everyone will understand your business. Please, you have to first understand this. Not everyone is your prospect. हम बड़ी जल्दी दिल बैठ जाता है हमारा, हमने 5 लोगों से बात किया यार, 4 लोगों को समझ ही नहीं आया. It will never be like that. हर आदमी को एक बिजनेस नहीं समझ में आता है. कुछ लोगों को टेलीकॉम का बिजनेस समझ में आया, कुछ लोगों को गोल्ड का बिजनेस समझ में आया. इट डजंट मीन कि उन दोनों को टेलीकॉम वाले को गोल्ड का बिजनेस में कमाता नहीं, पर क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता इसलिए उसने किया ही नहीं. सो नॉट एवरीवन इज मेड फॉर एवरी बिजनेस. सेम विल हैपन विद यू. We also need, if we talk about partnership or if we talk about leadership, we at Global Garner only need 18,000 people. Out of 140 crore people, 18,000 people only. So we need not to tell the entire Global Garner story to everyone. It's very simple. So when you are doing prospecting, if you want to create a list today, please sit, watch Just Dial, watch India Mart. आपको अपने किन लोगों से बात करना है, be very specific कि किससे क्या आपकी expectation है. Prospecting is the key to reduce at least 10% of your efforts. At least. जितनी better prospecting आप करोगे उतना आपका मेहनत फील्ड में कम लगेगा. People generally fail to prospect. It is very important to prospect and prospect in a right way where you understand the problem of the person whom you are addressing. अगर मुझे किसी का प्रॉब्लम पता ही नहीं, जैसे इन एड्स में आप देखो उन्होंने प्रॉब्लम तुरंत आइडेंटिफाई किया और उन्होंने नहीं बोला, सलमान खान नेवर सेड दैट दिस इज योर प्रॉब्लम. नो, ही आस्क्ड सच क्वेश्चन टू दैट गाय टोल्ड दैट दिस इज माय प्रॉब्लम. क्योंकि आप अभी किसी भी दुकानदार से मान लीजिए उसको वेंडर बनाने के लिए बोलेंगे यार, वो बोलेगा यार मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब करोड़ों रुपए का वो चल रहा है. और जब आप बोलेंगे कि यार आप वेंडर बन जाओ, नहीं यार हम कमीशन, हमारे बिजनेस में तो मार्जिन ही नहीं है. तो जब आप राइट स्टेटमेंट पिच करोगे तब आपको वो राइट आंसर्स देगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट स्क्रिप्ट. वी विल टॉक अबाउट दोज स्क्रिप्ट्स आल्सो इन टाइम टू कम, बट टुडे वी आर ओनली सेइंग दैट डू योर प्रोस्पेक्टिंग राइट. People who are in business where they are earning high tickets on their products are not your prospect for maybe UPOS or maybe vendor. जो आपका UPOS खरीद सकता है वो जरूरी नहीं है कि UPOS पार्टनर बने या बनना चाहिए. ये प्लीज क्लियर रखिए. जरूरी नहीं है जिसके जेब में 63,000 रुपीज है वो UPOS का प्रोस्पेक्ट है. वो आपको सिर्फ पैसे दे पाएगा, वो उस पर ट्रेड नहीं करेगा. और हमारी ताकत ट्रेड में है, सिर्फ यूपॉस बेचने में नहीं है. ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं. क्योंकि यूपॉस एक सिंगल टाइम इनकम मिल जाएगा, बट जितना ज्यादा यूपॉस यूज होगा उतना ज्यादा हम इनकम करते हैं, उतना ज्यादा कंपनी का भी पावर बढ़ता है. सो पीपल विद मनी आर नॉट योर राइट प्रोस्पेक्ट फॉर यूपॉस.
people who have intention of doing retail business are your real prospects, right? So way forward, as an ACP, as an BDO, or as a partner, your key focus should be on recruiting vendors, and through those vendors you will always get UPOS partners. इसका हमने एक कैलकुलेटर भी दिया है कि आप उनसे क्या बात करोगे। तो मैं आज आपको स्क्रिप्ट पे नहीं ले जा रहा हूं, आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। वी विल टॉक अबाउट स्क्रिप्ट इन लास्ट 3 days। हमारे लास्ट के 3 दिन केवल स्क्रिप्टिंग पे ही है कि किससे क्या बात करनी है। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट, 30 सेकेंड स्क्रिप्ट। आई विल गिव यू अ 30 सेकेंड स्क्रिप्ट जिसको आप बोलो और उसको अगर एज इट इज आपने डिलीवर कर दिया, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स। The way I have got, please understand, I have brought in the best of the vendors in the country in Global Garner. तो मैंने कुछ तो सही किया होगा, कुछ तो सही स्टेटमेंट्स बोले होंगे। जब मैं वेंडर रिक्रूट करने जाता था तो मैं ये नहीं बताता था कि ग्लोबल गार्नर ये है, उसका यूपॉज ये है। हम केवल वेंडर की बात करते थे उनसे। इससे उनका भी टाइम कम लगता था, हमारा भी टाइम कम लगता था, बात बहुत स्पेसिफिक हो जाती थी। Same you have to implement in your discussion with your prospects. So today we are only learning how to do prospecting. आज आप जब prospecting list अपनी बनाएं, उसमें बहुत क्लियर रखें कि इस आदमी से मैं सिर्फ वेंडर की बात करूंगा। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट जनरेट हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो आपका क्या फायदा है, क्या इसमें कुछ और भी किया जा सकता है, when he is asking something, then you should reply. ये जो अभी हम खुद जाके उल्टी कर देते हैं, ये हमें नहीं करना है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर। यू शुड नॉट वॉमिट द इंटायर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। जिस आदमी को आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में लिखा है कि मैं इससे वेंडर की बात करूंगा, इससे मैं यूजर की बात करूंगा, जैसे मैं कई एमएलएम लीडर्स के साथ आजकल काम कर रहा हूं, मैं उनको बोलता हूं एमएलएम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ समझेंगे नहीं डिजिटल बिजनेस के बारे में। उनको आप लीडरशिप में मत लाओ, उनको आप यूपॉज मत दो, उनको आप सिंपल बोलो माई सर्किल के लिए। व्हाई? दे आर गुड एट इट, और उनका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई रिस्क नहीं हो रहा, दे विल जंप इनटू दिस। तो डू अ राइट सेगमेंटेशन। जिसको यूजर बताना है उसको सिर्फ यूजर, जिसको वेंडर बताना है उसको सिर्फ वेंडर, जिसको पार्टनरशिप बतानी है उसको सिर्फ पार्टनर, क्योंकि उसको आपको पूरा इवॉल्व करना है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए when you are recruiting someone in your team. But if you are not recruiting for him as a team member, just tell him what he requires to know. That's it. And if his interest generates and if he is asking, then you can tell. That is not a problem. But take first step at a time, one step at a time, right? These are your basic prospects. Anybody who is having a network is your prospect for your UPOS, like cable operators, like insurance agents, any store owner who already has multi stores, any small businessman, right? Any consultant. Generally, consultants have good network, but they are not able to encash them every month. Anybody who wants to make an extra income, housewives, because housewives generally have joined today some kitty network or something. Some networks are always with them. Anybody who has a good network, already has a good network, is a good prospect for a UPOS. Don't sell your UPOS to a person who only has money. I'm again and again repeating this. UPOS is a product which has to be sold to a person who believes in retail business, who wants to earn a retail income. This is very important for all of us to understand. हम कई बार इसमें समझ नहीं पाते कि जिसके पास पैसा है जरूरी नहीं है वो हमारा यूपॉस का प्रोस्पेक्ट हो, क्योंकि वो ले लेगा, वो शायद शेयर्स के लिए ले लेगा या किसी चीज के लिए ले लेगा, बट ही विल नॉट ऑपरेट. And our strength lies in operation of UPOS. Yes, UPOS is an immediate income for you also and for company also, and it is very much required. Without it, we cannot run the system. But we should know who is the right prospect for it, right? Then comes the user. User is very simple. Anybody you touch, you can propose him a user benefits of Global Garner.
जिसका भी साल का 10,000 रुपए खर्चा है, he can become your user and just tell him about my circle. Very simple. बोलो 6 लोग रेफर कर दो and you start earning 1 crore. And this my circle, I'm telling you, has given me huge success in last 3 months. I have seen, right? We all know about my circle, but the next script that comes in for UPOS pitching, everybody will agree. As a consumer, anybody and everybody will agree कि हाँ ये तो पॉसिबल है यार, ये माई सर्किल आज नहीं कल तो पूरा होगा. एंड मैं कह रहा हूँ 9 सर्किल्स के बारे में लोग कन्विंस ना हो तब भी चलेगा. मान लीजिए 4 सर्किल के बारे में वो कन्विंस है कि हाँ 4 सर्किल तक तो मुझे लग रहा है कि हम खुद कर लेंगे, 255 लोग ही तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा. एंड वी हैव सीन n नंबर ऑफ एग्जांपल वेयर पीपल हैव अचीव्ड देयर 4 सर्किल वेरी इजीली, राइट? Now just show them very small thing when you are doing the prospecting thing. No, prepare your script in your head. Now you tell them, sir, you have earned 500, but I will earn 1200 in my UPAS. You have earned 1,000 rupees, but I have earned 7,200 in my UPAS. You have earned 3,500 rupees and I have earned 43,000 in my UPAS. You have earned 15,000 rupees, but I have earned almost 2.6 lakh rupees in my UPAS. Now just stop here only, because this looks very small. This 20,000 rupees cashback is very small for any consumer. He will understand कि यार ये तो बहुत easily हो सकता है. Now you tell him कि sir, just see if there was an UPAS no, you would have earned almost more than 3 lakh rupees. Just on the 4th circle. और ये अब हर महीने होना है, क्योंकि जिसको आपसे कैशबैक मिल चुका है 500, 1000, 3500 या 500 रुपए, 5,000 रुपए या 15,000 रुपए या 10,000 रुपए, वो अब आपके सिस्टम से बाहर जाके शॉपिंग नहीं करेगा. So on single shot, you are making your user a prospect for your UPAS. और उसको बोलो कि भाई आप मान लो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, बट इसकी कहानी चलती रहेगी. और अगर एवरेज इनकम एक माई सर्किल पे 2% की पकड़ के चलें, in your UPAS you will be earning more than 240 crore rupees. If average commission we take as 2% only, और हम अगर lowest भी पकड़ लें 0.5%, then also it is 60 crore rupees, which is absolutely with zero risk. अब वो आदमी सोचने लगेगा. पहले तो आपको ये बोलने का तरीका पता होना चाहिए. उसको केवल बोलिए ना, स्पोर्ट तक तो आपको इजी लग रहा है, आपको 1 करोड़ नहीं समझ में आ रहा है, 20,000 तो समझ में आ रहा है, बोलो हाँ. वो बोले 100% आज तक इसका नेगेटिव जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया है. आई हैव मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं. अगर जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं आपने इस तरह से बोला, कोई भी आपको मना नहीं करेगा. क्योंकि 4th सर्किल तक तो सबको बहुत इजी दिखता है, 3rd सर्किल तक भी दिखेगा तो भी ये हर महीने की ऑलमोस्ट 60,000 रुपए इनकम है हर महीने की. क्योंकि एक बार किसी कंज्यूमर को 500 रुपए भी आपसे कैशबैक मिल गया, वो कहां से नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेगा? आपके थ्रू ही करने वाला है. सो कंज्यूमर को कंज्यूमर का रेफरल बेनिफिट मिल रहा है और यूपॉस को उसका ट्रेड इनकम मिल रहा है. बोथ आर हैप्पी एंड दिस विल इंक्रीज योर यूपॉस सेल्स. और इस बार यूपॉस सेल केवल शेयर की वजह से नहीं हो रही है, ट्रेड की वजह से हो रही है और ट्रेड इनकम की वजह से हो रही है. इस चीज को ध्यान दे रखिए. So this is one big tool when you are doing your prospecting. You should know कि मैं अगर किसी को ये बोलूंगा, ये बोल के कितने लोग अट्रैक्ट होंगे, उनको एक लिस्ट में लिख लीजिए. Let's say you are meeting an insurance guy. आप किसी इंश्योरेंस वाले को मिल रहे हैं तो उसको आप ये जरूर बताइए. किसी केबल ऑपरेटर को मिल रहे हैं उसको आप जरूर बताइए. किसी BNI वाले को मिल रहे हैं उसको आप ये जरूर बताइए. Anybody who has a smallest of the network, you tell them कि now you can convert your network into your net worth. That is an income for you. So prospecting is a simple thing, but it will reduce lot of pressure from you. But you should know how to pitch that, how to use that script. We will also talk about script in our last 3 days. Tomorrow we are going to discuss startup kit, but after that we are only going to talk what needs to be discussed when you are on deck.
एंड इसके वीडियोस भी ऑलरेडी हैं, बट मैं रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करो प्लीज, बिकॉज अंटिल यू गो आउट एंड प्रैक्टिस दिस, लुक, इनकम everything is for those who go out and practice, right? Today I need not to travel like what I do right now, but I do because I have a bigger purpose behind that, right? So my only submission to all of you is there are 4 category of people that you will prospect. One is user. Only tell him about user benefits. कि भैया तुमको 1 करोड़ का कैशबैक मिल सकता है हर 10,000 रुपए की शॉपिंग पे, तुम यूजर रेफर कर सकते हो, तुम वेंडर रेफर कर सकते हो, तुम्हें इनकम मिलेगा, दैट्स इट। इतना सा बताना है उसको। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन फॉर अ यूजर प्रोस्पेक्टिव, जस्ट टेल हिम दिस मच। सेकेंड इज योर वेंडर, you can tell him that we are the world's first post-paid distribution network with which gives you free digitalization, plus you have user benefits also. Simple script। 4 कैटेगरी में आपकी यूपॉज लिस्ट बनेगी, सॉरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनेगी। फोर्थ इज योर यूपॉज पार्टनर who wants to buy, who can buy UPOS, who can trade on UPOS. Now you can tell him that we have a product which will give you a diversification in your current product catalog. If you are selling mobiles, now you can sell the entire electronics, ration, everything, 20 crore product and services, and you have an opportunity to earn 240 crore rupees every year through your UPOS. Only this much. And finally, when you are talking to someone on leadership, then you have to tell him the entire wow. आप ये मान के चलो, user definition should not be beyond 20 minutes. Vendor definition should not be beyond 20 minutes. UPOS benefit should not go beyond 20 minutes. In leadership benefits, you have to talk about everything. Therefore, it has to be more than 1 hour. Value your time. Do this type of segmentation when you are preparing your list. कि ये मेरा यूजर प्रोस्पेक्ट है यार, इसको मैं कुछ भी समझाऊंगा, ये कहीं पैसा नहीं खर्च करने वाला है, ये वेंडर नहीं बनेगा क्योंकि इसका कोई बिजनेस नहीं है, बट ये यूजर बन जाएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि व्हाट प्रपोजल वी आर गिविंग टू अ यूजर इज वेरी इजी. एनीबडी विल बिकम आवर यूजर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Second is vendor. When we are talking to a vendor, it's a purely post-paid sales system. Tell him. People who have got thumbs up on Just Dial or India Mart or some mart, they will always get into this. Why? Because they have paid in advance to get sales. And we are the world's first company which is giving post-paid sales service. Why will they say no to us? Third one, UPOS. Now, if someone wants to diversify, somebody is a restaurant owner, somebody is a cable operator, somebody is an insurance agent, somebody is having a good network, and he is not able to optimize his network, give him a tool. Ki bhaiya, you lo UPOS, and now you can optimize your entire network. You can earn from your network. And finally, the leadership. Tell him all these 3 things and tell him, can you become a distributor of all these 3 things? And for that, tell him what is his earning, roadmap, everything. So while doing the prospecting, you should have 4 columns on your prospecting list. Who is your consumer? Who is your vendor? Who is your UPOS prospect? Who is your leadership prospect? Simple. If you are able to filter on your list, you will be successful. It's a very small thing to do, but it will have a higher impact on your conversion ratio. Right? With this, I come to an end of this session. If you have any query, then you can raise your hands. We will unmute you and we will answer your queries. Thank you very much. Mr. Satya, please unmute yourself. Yeah, thank you, ma'am. सर मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ, विकास राव से एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है सर. अभी मेरा यूपोस परचेज होके ऑलमोस्ट 20 days हो गया सर. आई मीन बिफोर दैट एक्सपो मैंने परचेज किया था.
आप मेरे को बताया कि यूपोस में मैं पहले कहाँ से शुरू करूँ, अपना वेंडर से या तो अपना यूजर से शुरू करूँ? Very good question. Now, you have purchased UPass for what? To earn, to make my money and earn my, business. Okay. Very good. So your earning will come from whom? Customer only, sir. Correct. So your Hmm. first target is to make a consumer in your customer, in your UPass, right? Now you Okay. have to only prepare one list, which is consumer, Okay. and give them that 18-minute wala video. Okay. There is one user benefit video in your app only. Okay. If you go in your app, in the sidebar, there is a there is a column which says vendor benefit, and then there is a column says user benefit. There is a video attached to it, 18-minute video. It explains about all the cashback benefits of Global Garner. Plus, it also explains from where Global Garner is earning and from where Global Garner is giving this money. So now your keen focus should be 5 customers in a day. Just talk to 5 people in a day. That's it. Okay. I am telling you, consumer conversion is very high when you have a very clean focus. Don't tell him about anything else. No vendor, no UPass, nothing. Just user. You tell him कि भैया तुम जो खर्चा कर रहे हो तुम you have to do just that खर्चा through me. तुमको जो चाहिए, तुमको बिग बास्केट चाहिए, तुमको जोमेटो चाहिए, तुमको उबर चाहिए, तुमको कल्याण ज्वेलर्स चाहिए, तुमको क्या चाहिए वो बोलो. When you have to go for a vendor search is when your consumer is regularly asking you something which is not on your vendor list. As of today, focus yourself on only building your user base. That's it. Once you have a user base, 300 consumers, you will be comfortably earning at least 1 lakh to 6 lakh rupees in a month. Okay. Right? And one more question, sir. Yeah. Actually, I've been in a BNA first 5 years, till I'm BNA. So how can you use that platform to this First, or very good point. Again, if you are a BNI member, now you can encash that network for your own benefit, right? But Yes. for that, create your own sample, earn something from your UPass. Then you can represent us in BNI saying that if you want to become a partner of this company, please come to us. I will make you a partner in this company, and then you may start making your leadership team also. So as of now, focus on your UPass only. UPass earning, that your UPass starts earning from your business. Once you have your own samples, you need not to tell कि भैया किसी और ने कमाया था. You will have your own samples कि यार देखो मैंने इस कंपनी का UPass खरीदा था. Now I have started earning 5,000. I will be very soon earning 60,000, 1 lakh, 5 lakh. This would be my journey. And then you can influence people that just like what I have earned, you can earn from Global Garner, and then you can always utilize BNI, JCI, or such networks, right? Yeah. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mr. Bhaskar Das, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. सर अब अभी हम लोग जो कर रही थी मतलब ये प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये बेनिफिट हम लोग को अच्छा लगा. तो मेरी क्वेश्चन है सर, जब हम लोग कोल्ड कॉल कर रहे हैं तो उसी टाइम में प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे सर? हाँ, अब जैसे कोल्ड कॉलिंग शुड नॉट बी टिपिकल कोल्ड कॉलिंग. एक कोल्ड कॉलिंग कैसा होता है कि जहां पे आप बिल्कुल ही अनजान लोगों को रैंडमली फोन कर देते हो कि सर मैं ग्लोबल गार्नर से बोल रही हूँ, आपका नाम क्या है. दैट विल नॉट गिव यू गुड बेनिफिट्स. Whereas what we should do is we should always seek an appointment first. We should know the profile of that person. इसीलिए मैंने बोला ना, लेट्स से आपको कोल्ड कॉलिंग ही करनी है. लेट्स से आपने जस्ट डायल से किसी का नंबर निकाला, स्टडी अबाउट हिम. जैसे मान लीजिए आज मैं किसी से मिलने जाता हूं, मान लीजिए मैं भारत पेट्रोलियम में मैं अभी मीटिंग करने गया, तो मैं जिस आदमी से मिलने गया उसका पहले प्रोफाइल मैंने लिंक्डइन पे देखा, उसको फेसबुक पे ढूंढा, उनके बेसिक डेली के पोस्ट पढ़े, एक बेसिक आइडिया लगा लिया वो किस तरह का बंदा है. जैसे मान लीजिए किसी को मुझे मिलना होगा तो वो क्या करेगा, मेरे फेसबुक पे जाएगा, देखेगा मैं किस तरह के पोस्ट डालता हूं, उसको एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा विकास रावत किस तरह का आदमी है. वैसे ही आपको एक प्रोफाइलिंग अपने दिमाग में रेडी करनी पड़ेगी अपने प्रोस्पेक्ट की. डोंट जस्ट ब्लाइंडली डू अ कोल्ड कॉल कि बस फोन उठाया और किसी को फोन कर दिया. नो, दैट विल नॉट गिव यू रिजल्ट. मैंने कभी नहीं किया वो.
आई हैव ऑलवेज वर्क ऑन गुड प्रोफाइल्स, और कोशिश मैं ये करता हूं जो मेरा सक्सेसफुल सेल है उसी को बोलता हूं कि आप मुझे मार्केट करो, उनसे लीड लेता हूं। जैसे मैंने आपको बोला, इंश्योरेंस में हमें यही सिखाया जाता था, जब भी कॉल क्लोज करो 5 रेफरल मांग लो, और वो आदमी क्योंकि आपका कॉल क्लोज हो रहा है उसके साथ वो खुश होता है, वो आपको रेफरल भी दे देगा, वो सब कुछ दे देगा, राइट। और सर वेंडर, जब कोई वेंडर को साथ हम मीट करने के लिए जा रही हूँ, फील्ड में ये प्रॉब्लम हुआ कि मतलब जिसको साथ अपॉइंटमेंट किया वो तो पहले तो मतलब ओनर को साथ बात करने नहीं देता है, तो ओनर को साथ बात हो जाता है तो वेरी गुड। लेकिन सर क्या होता है, मैनेजर या उन लोग का क्या है ना, ये जैसे आप बोला एक तो जो 5% कमीशन के लिए, उसके बारे में हम लोग का इतना मार्जिन नहीं है, हम लोग का कंपनी का ये प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मतलब उन लोग को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो पॉइंट और है सर, वेंडर हम जब अप्रोच करने के लिए जा रही हूँ तो बेसिक हम लोग को 30 सेकंड में क्या बोलना चाहिए? जो आपको बोलना चाहिए वो अभी मैं परसों सेशन करने वाला हूँ। वो पहला 30 सेकेंड्स में हमें क्या बात करना है वो हम बात करेंगे। आज वी विल ओनली फोकस ऑन आवर टॉपिक विच इज प्रोस्पेक्टिंग। ओके सर, तो मेरे को कैसे मतलब किसको साथ बात करना है वो कैसे क्या बात करना है वो हम बात करेंगे। लास्ट 3 दिन हमारा यही सेशन है। आज आप केवल ये समझो कि पहले प्रोस्पेक्टिंग करते समय यू शुड नो द ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ द प्रोस्पेक्ट दैट यू आर गोइंग टू मीट और यू आर गोइंग टू टॉक। डोंट डू अ ब्लाइंड कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल इज ओके बट इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड कोल्ड कॉल, बिकॉज इसमें आपके भी एफर्ट्स ज्यादा जाएंगे और आपको तकलीफ भी ज्यादा होगी। और फिर मैंने बोला यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन पावर ऑफ 10, मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ बाय 10 ओनली। 10 अच्छे आदमी ढूंढना कोई बड़ा काम नहीं है, और 10 आदमी आपके पास अच्छे हो गए उसके बाद आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। जस्ट फोकस ऑन स्मॉल थिंग, जो पहला वीडियो दिखाया, फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। Mr. Arvind Kumar, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं 17 साल से सर आपको फॉलो कर रहा हूँ, यानी इस वीडियो को देख रहा हूँ सर मैं। 17 साल से? सॉरी सॉरी, 2017 से सर। हाँ तो ठीक है। और मैं एक्चुअली नेटवर्क करता था, एलएमएल वगैरह करता था, तो मुझे जब लगता था कि ये कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था सर जी। लेकिन कंटिन्यूअसली क्या था कि मैं महीने में 1-2 वीडियो जरूर देख लेता, कभी 6 महीने में लगातार कंटिन्यू हो जाता था, फिर जी। अलग हो जाता था। मैंने कई लोगों से कांटेक्ट करने के लिए सोचा कि आखिर है क्या ये, जी। है ना। लास्टली मुझे एक शख्स मिल गए जो मनोज कुमार करके हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, है ना। उन्होंने मुझे ना समझना, मेरी समझ दूर थी, लेकिन उन्होंने समझाने में पूरी कोशिश की सर। जी। आज की डेट में मैं फर्स्ट टाइम आपका ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक डिफरेंट वे में जा रहा हूँ सर, जो लोगों से सबसे अलग कर रही वेलकम टू द है। ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। वेलकम। अभी के लिए तो सर मेरा इतना ही है, अब मैं भी फॉलो अप कर रहा हूँ सर, बस और कुछ थैंक यू नहीं। थैंक यू थैंक यू जी। Next is Mr. Mukesh Singh. Please unmute yourself. अरे तनीषा जग जाओ, तुम तो लग रहा है सो जाओगे 2 मिनट बाद। सर गुड मॉर्निंग हो रहा है पानी सर। मारो मुंह पे। सर जुकाम सर हो गुड रहा है मॉर्निंग। मुझे। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हम लोग भी सो जाएंगे 10 ये बोले थे सर, एक्चुअल कुछ हमारे टीम है आरा के और वो सेटिस्फाइड हैं इस सिस्टम में आने के लिए, कुछ वेंडर। लेकिन सर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो मेडिकल स्टोर है उनका और वो होलसेलिंग करता है, तो हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे? वो बोलते हैं कि हम रिटेलर तो देते हैं छुपे छुपाए, लेकिन हम उनको बिल नहीं दे सकते हैं। तो सर ऐसा क्या है, कोई ऐसा सिस्टम देने है की जरूरत जिसमें? नहीं है। जो भी वो बिलिंग कर रहे हैं कहीं तो कुछ तो लिख के देते होंगे ना। जी जी। पक्का बिल नहीं देते होंगे केवल, बट कागज वाला बिल तो कुछ तो लिखते होंगे ना कहीं पे। उनको अपना बिल खुद ही लिखते हैं। एक्सेप्ट करना है सिस्टम में, दैट्स इट। और वो अच्छा, आपको अच्छा, सेशन आप अमित से बात करिएगा, वो आपको बता देंगे। आज हम केवल क्वेश्चंस ले रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, है ना। तो बाकी लोगों के लिए भी यही है, मेरा सुझाव है, प्लीज आज अपने क्वेश्चंस को केवल एक सब्जेक्ट पे फिक्स रखिए, विच इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो आप बताइए, बाकी हम एक दूसरे की तारीफ बाद में करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Next is Mr. Madan Kumar. Please unmute yourself.
Vikas sir, very good morning, and this is Madan Kumar from Chennai, and gratitude to you first of all for conducting such a wonderful session. It's been very insightful. I've just joined very recently, about a couple of months it has been, especially, and I'm on a learning mode. But yes, sir, there has been a challenges which I've been facing. I've already been into the loyalty program. I work for MasterCard actually, and I wanted to, before 5 years, I've served in this industry, but I really wanted to, be in the loyalty program especially, and I found it really good. But sir, the challenges which I found it is on the user benefit first of all, like especially the charges, sir. When I myself, when I face to do some of the utility, especially like the electricity bill or a mobile or most of, okay, the charges being very high, number one, and most of the users, whichever they are not that savvy first of all to go on a mega brand only first of all. Okay, like I mean, and obviously because we have to facilitate with the local their own shop or their tie-up, and again we have to recruit with the vendors and margins and all this stuff comes especially. Okay, so my only thing over here is like especially like suburbs where there are not much of a mega brand. Okay, like there are, I have a friend from Himachal, okay, who is not much savvy first of all, except to use the utility. There are not much product available from him on a day-to-day basis first of all, and if he wants to use something, he has to go for groceries like Reliance or something which is not available in most of the suburbs. In such a case, what sort of user benefits we can give it to them, sir? Okay, and the charges especially is very high, especially like what we can do in this because charges in only utility segment is there, right? Only in one segment, which is utility segment, where we say bill pay and recharges, right? So first of all, we need to understand this is the business model, right? If he doesn't have any grocery shop around or something, if he's like living in such a spoke location, let's leave that consumer right now. Let's remove them from our prospect list. First of all, let's get into A, B, C, D, E, F, G wala category of city, and then we'll talk about the Z category city, where nothing is available. First, we need to penetrate into the almost 50 crore people who are living into the cities, right? Who have all these brands and facilities. Let's first penetrate into that, and then we'll talk about all those. So our prospect list should not have those people whom we cannot cater first of all. It will create a problem for us, because look, I always say कि घोड़े को घोड़ा क्यों कहते हैं? There is no answer to it, right? There has to be some charges where we are not earning anything to give cashbacks, because we cannot give cashbacks from our pocket very clearly. So our business model is very clear. Actually, where you come from, it is Tamil Nadu, where people have most of our consumer have gained a lot of cashback. And now they don't mind giving that 3% extra or 5% extra. Why? Because they know the power of GG's cashback. Because people who are new into the system will not understand that, just remove them right now from your prospect list, who don't have those big time vendors or all those vendors. Let's focus on 50-60 crore population who is living in the city areas, who are having those facilities, whom we can cater our services for free. So our prospect list should be with those people. Let's first focus on 100 people. At least we would know 100 people who are living in city population. Let's not go into deep down into that location where nothing is available. Of course, we cannot do right now anything for them. Thank you. Okay. Yes, sir. Got it, sir. Thank you. Next is Mr. Kiran. Please unmute yourself. Hello. Good morning, sir. Good morning. Sir, I am an internet service provider and I have around 300 to 500 customers, but I am not able to understand how I have to prepare a prospect list of that customer, because we don't know what our users are using and what is. So I want a little bit help on that. You are sitting on a diamond core, first of all, let me tell you, my friend. Yeah, sir. What you can do is you have to first become a vendor of Global Garner. Yeah, that I am and already now there. What you can do is just offer cashbacks on your services to your consumer. So by this way, they will become your consumer also.
Once they will get cashback on your product, they will 100% buy other products also from you. Now you can tell them, okay, I have a UPOS also, on which you have Big Basket, you have Pantaloon, you have Shopper Stop, this and that, and then you can start cross-selling them. And we have a very specific channel for that also. So you can talk to our DSP leader in Devraj. He will help you to engage these customers. How he will tell you. You just follow that. So you already have a database. Now you are my best prospect. You already have a database. You yourself are a vendor to them. So let's say if you are giving your services on cashback to your users, they will automatically convert themselves in GG users. And then you can slowly start pushing other products to them and diversify your income on your subjects. Okay, sir. Right? So your first step is become a vendor of Global Garner. Start giving cashback on your products to your consumer. क्योंकि consumer अपने लिए cashback के लिए आपको मना नहीं करेगा. All you need to push one notification to them, being an ISP, your internet bill can be free. Please download this app and pay me through this app. Because they are not paying you anything extra. You only have offered them cashback. Now you are sitting on a diamond mine. Right? Okay, sir. Yeah. I'm already a GG vendor for my product. Superb. So now just start circulating these teasers to your customer that on your ISP bill, your internet bill, this is the cashback that you are eligible for. Get 2% to 100% cashback on your internet bill. Just push this. They will immediately download your app and they will immediately start using, paying you through the app. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot. Miss Asta, please unmute yourself. आस्था हजारे जी हैं तो इनको हम क्या सिखाएंगे? गुड मॉर्निंग सर. अरे आस्था हजारे जी हैं, बोलिए मैडम. सर एक्चुअली ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम यहाँ वाड़ी में फेस कर रहे हैं वो ये है कि किसी भी इंसान को पार्टनर के लिए प्रोस्पेक्ट करना, जैसे वो सेल का नाम सुनता है ना वो भाग जाता है. जैसे वो क्या सुनता है? सेल्स करना है उनको पिच करना है कोई चीज तो वो भाग जाता है. नहीं तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम पिच किसको कर रहे हैं. सर मैं वही पूछ रही हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग जैसे आपने वेंडर्स के लिए बताया कि हम जस्ट डायल में देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो सेल्स के लिए हमें जो पार्टनर्स चाहिए वो हम कहाँ देख सकते हैं? वो भी वहीं दिखते हैं. आप वहां पे जाइए और वहां पे इंश्योरेंस एजेंट्स को ढूंढ लीजिए, केबल ऑपरेटर्स को ढूंढ लीजिए. ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं, ये सब सेल्स ही कर रहे हैं. अपने नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख लीजिए. इंडिया मार्ट पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे जो आपको वाड़ी में ही होंगे. बस केवल उनको पकड़ लीजिए. ओके सर. क्योंकि उनको सेल्स से कोई कुल्फत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. उनको ये 100-200 रुपए कमाने का मजा पता है. जैसे अभी वो ISP साहब आए थे, वो पूरी डील में 50 रुपए से ज्यादा घर नहीं ले जाते होंगे, बट वो कस्टमर को सर्विस पूरी देनी पड़ती है. उनके घर में तार पे बिछाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है. तो ऐसे लोग आपके लिए बेस्ट प्रोस्पेक्ट है. और 100% केबल ऑपरेटर आपके एरिया में होगा ही होगा. केबल ऑपरेटर या ISP सर्च करिएगा. ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना? ओके सर, थैंक यू सर. ओके. Mr. Rajendra, please unmute yourself. Good morning, Vikas ji. Hi, good morning. Vikas ji, I am the part of the Art of Living. So how we can prospect them? Again, you will find lot of people there who will be your prospect. But first of all, you need to connect with them and understand their profile. Because in Art of Living, you will find vendors also. You will find look, anybody and everybody is our consumer. That is not a problem. If you want to pitch them first a user benefit, simply tell them about user benefit of Global Garner. I am talking about the leaders, customer. For leadership, you need to understand their profile. Because in Art of Living, everybody comes. Unless you don't know the profile, you will not be able to do proper prospecting. We know very closely to each other. So we can then manage according to their profile, you can put them in your prospect list, and you can always arrange a meeting with them, and then you can do the vow with them. Okay. Yeah. Thank you, Vikas ji. Welcome. Next is Mr. Dashrath. Please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर. हाय, गुड मॉर्निंग सर. बोले थे बीपीसीएल के बारे में बताएं. तो बीपीसीएल पेट्रोल पंप्स में मेरी कॉन्ट्रैक्ट है करीब 20-30 पेट्रोल पंप्स, मैनेजर्स, ओनर्स और स्टाफ्स की.
तो उनके साथ में अपॉइंटमेंट भी ले रखे एक दो मैनेजर्स के, तो उनके साथ प्रोस्पेक्टिव किस तरह से अभी जो कमिंग प्लान है हम लोग का ग्लोबल गवर्नर या बीपीसीएल का, उसकी अपॉर्चुनिटी किस तरह उनको दिखा पाऊं कि वो पॉजिटिव हो। देखिए, उनको सबसे पहली चीज तो यही बता दीजिए कि आज जो उनके यहाँ कंज्यूमर आ रहा है वो 1 लीटर पे उस पर 1.5 से 2 रुपए कमा रहे हैं। उनको सिंपल बोलिए कि भाई मैं आपको एटलीस्ट 100 रुपए कमाने का टूल दे सकता हूँ, जो कि 2,000-3,000 रुपए भी जा सकता है। उनको बोलिए मैं आपको एक ऐसा टूल दे सकता हूँ, आप अपने कंज्यूमर को इंश्योरेंस भी बेचिए यहीं पे बैठ के। आप उनको मोटर इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि उनके यहाँ मोटर ज्यादा आ रही हैं, तो वो आपके मोटर इंश्योरेंस के लिए सबसे बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्लस बोलिए मैं आपके पेट्रोल पंप को एक डिजिटल दुकान में कन्वर्ट कर दूंगा, जो हमने अभी बेसिकली जो हम इधर अभी बीपी को भी हम प्रपोज कर रहे हैं, हम यही प्रपोजल कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अमित संधू जी से बात करिएगा, वो आपको वो प्रपोजल ही बता देंगे। सेम प्रपोजल आप किसी भी पेट्रोल पंप वाले को पिच कर सकते हैं। तो अगर आप उसके कंज्यूमर से उसको 100 रुपए भी महीना निकाल कर दे रहे हैं, तो आज उनके पास कम से कम महीने के कुछ नहीं तो 20 से 25,000 कस्टमर होते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी इनकम है ये। जी सर, है ना जी। ओके सर, थैंक यू। Mr. Laritful, please unmute yourself. Please unmute. Yeah. Okay, So, next is. Yes, sir, please ask. মামলা হচ্ছে নাকি রেলওয়ে স্টেশনে? We'll move to the next person. Mr. Sanjay, please unmute yourself. Good morning, sir. I'm Sanjay here. Yeah, good morning. Sir, अभी prospecting के बारे में जैसे बात कर रहे थे vendors का, so on board of discussion कुछ garages जो है, 2-wheeler का garages है और trucks का garages है, 4-wheeler का garages है. In discussion, they're users actually, and they're interested for getting into the vendorship. Isn't it possible, sir, उन लोग भी vendorship में आ जाएं? Yes, anybody who trades can become our vendor. बिकॉज उन लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम अपना कस्टमर को फैसिलिटी देना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। आप उनको तुरंत वेंडर बना सकते हैं। ओके सर, दूसरी बात ये स्कूल्स के लिए जैसे बात करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है सर वो स्कूल्स स्कूल? देखिए आपके डबल साइडेड प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो वो आपके यूपॉस प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। दूसरा दे themselves can become a vendor because now they can give cashback to the students and these cashbacks can be multiplied. Why? This will increase their income because now when they give cashback on their school fees, of course that person has become a consumer. जो मैं अभी ISP वालों को बोल रहा था वो स्कूल वालों पे भी एप्लीकेबल होता है कि उनके पास जो कंज्यूमर बेस है उसको पहले उन्होंने अपना यूजर बना लिया और उसके बाद उन्हीं को यूपॉस से क्रॉस सेलिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चे स्कूल बुक्स लेते हैं, हॉर्लिक्स आता है घर में, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों से रिलेटेड आती हैं जिनकी सर्विसेज स्कूल खुद देना शुरू कर सकता है। लेकिन सर कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जैसे आईसीएसई बोर्ड्स होते हैं या सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, देन उन लोग बोलते हैं कि उन लोगों को परमिशन होना पड़ता है फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, तो उस जगह कैसे क्या करेंगे? इसमें कोई वो स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है ना, ये ट्रेड एक्टिविटी है, इसके लिए ऐसा कुछ उनको अप्रूवल नहीं चाहिए। और फिर वही बात है, वो केवल रिकमेंड कर देना किसी को, वो अपना कोई डमी। देखिए जिसको बिजनेस करना है वो सब जानता है कैसे करना है। बट आई डिड हैव अ डिस्कशन, तो उसके बीच में बोले ना इफ हम इम्प्लीमेंट करें तो इंडिया सारा में उनका दूसरा ब्रांचेस भी हैं नाउ, तो उनको बोलिए ना वो करें वहाँ पे, और उनको आप बोलिए कि तरीके उनको बेटर पता होंगे, तो बोलिए कि हम आपको सॉफ्टवेयर दे देंगे, बाकी आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको देखना है। विल दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द हेड? ऐसा मेरे हिसाब से तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट वो वही बता सकते हैं क्योंकि मैं अभी इसमें डिटेलिंग में नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता। ओके सर। और तीसरी बात है जो पेट्रोल पंप्स हैं जो भारत के हैं या एचपी के हैं, तो ये तो फ्रेंचाइजीज हैं, इन लोग आउटलेट्स तो फ्रेंचाइजीज हैं। नहीं, फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजें कर सकता है, उसमें उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल फायर वाले प्रोडक्ट्स रखने में उनको रिस्ट्रिक्शन होती है, बाकी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फायर वाला प्रोडक्ट्स जो उन लोग डील करते हैं जैसे फायर इक्विपमेंट्स जो डील करते हैं, दे कैन आल्सो टेक वेंडरशिप सो दैट उनका कस्टमर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। देखिए फिर वही बात है, आप किसी को भी वेंडर बना सकते हो, उसका तो कहाँ प्रॉब्लम है।
नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि कुछ बोलते हैं कि हम लोग को हेड ऑफिस से परमिशन चाहिए होगा, या फिर हम लोग जैसे देखिए, जब वो कुछ आपको इस तरह का बोल रहे हैं, एग्रीमेंट्स। दैट मीन्स दे आर मेकिंग एन एक्सक्यूज। जिसको बिजनेस समझ में आ ओके। जाता है और इसको सच में करना है, वो एक्सक्यूज नहीं देगा, वो रास्ता ढूंढ लेगा। और ओके, मेरे देन हिसाब वेयर से इज पेट्रोल पंप वाले द। क्या क्या करते हैं वो आपको बेटर पता होगा, जो कानून वो में तो नहीं है है। ही। करेक्ट। हाँ, वो तो है तो ही। वो कानून हाँ। के हिसाब से सारी चीजें नहीं कर रहे हो, केवल आपको टालने के लिए ये लाइन बोल रहे हैं कि हमें हेड ऑफिस से परमिशन लेनी है। कहीं वो जीएसटी के भय से बोलते होंगे। वही मैं कह मैं रहा भी हूँ, सोच। जो भी है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो आपको टालने के लिए भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स देता है। डोंट गेट इनटू द सोल्यूशन मोड ऑफ दोज थिंग्स। उनको पहले ओके। बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड करिए। अगर वो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो गए, वो रास्ते हाँ, खुद बना लेंगे। ठीक जब है। तक वो इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक ही ये सारी प्रॉब्लम्स उनको दिखती हैं। हम्म। तो थैंक यू। इसमें मेन 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 पॉइंट जो पिच करने हैं वो ये है कि रिटर्न, कैशबैक रिटर्न। एंड सर, इसमें जो कैशबैक रिटर्न तो मेनली खासकर के कॉइन्स के हिसाब से ही आते हैं, और कोई मनी बैक तो नहीं आता है। जस्ट यूपीवी एक मिल जाता है, यही तो है, और कुछ तो नहीं। जैसे मेगा ब्रांड्स में हम लोग जाते हैं 1% एंड 0.35% से मिलता है। वेंडर्स क्रिएट करने में तो सिर्फ ऑन यूपीवी क्रिएशन नहीं होता है, और कुछ तो नहीं होता है ना। देखिए, वेंडर सबसे पहले तो अपना कस्टमर बेस क्रिएट करता है। वेंडर से क्या बात करनी है वो हम परसों बात करने वाले हैं। आज ओके, प्रोस्पेक्टिंग फाइन। पे टिके रही है, परसों हम बात करेंगे इस पे। हाँ, तो प्रोस्पेक्टिंग जिस जिस एरिया में करने चाहता हूँ, दैट इज ओके, गैरेजेस हाँ एंड बिल्कुल, स्कूल्स कोई एंड ऑल। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Next is Mr. Madan Kumar. Please unmute. Sir, Madan, once again, my question is regarding the vendor prospecting only. Can I ask a question regarding vendor prospecting? Yeah, please go Now, ahead. yes, sir. Now, the thing is, we are saying that it's a post-paid sales system. Okay, especially in a loyalty program, we pitch that, and also it's the challenges in the industry. It's like the vendor says that, I don't get customers, first of all, even though I'm giving points to you. Okay, but here we are talking about he pays only when he get is a customer. But most of the vendors, even though who are onboarded, are idle, or they, like, of course, they don't get customers, first of all. Now, in such a scenario, now the vendor asks, we only have to market, we have to give you the margin, and we only have to, like, prospect your customers, and we have to go, which I don't have the time, first of all. Right. Now, because we are Mr. talking about Madan, only, yes, sir. So how I we understood your can. query. I understood your query. Now, understand first of all. First of all, as a vendor, you are not paying me anything advance right now, right? If I give you sale or not, that doesn't bother you right now. Let's say if you want to use us as a tool of retaining your customer, let's say there are 3 grocery shop in your area. One is giving cashback and other 2 are not giving cashback. Where will you go and buy as a consumer? Just ask this question to that vendor. Okay, so that's a good What will be input. his answer? Obviously, where he Use gets some us benefit. as a tool to engage your customer. Else, if you are not using us as a tool, don't worry. Whenever we will send a customer, then only we are going to charge. So there is no point in arguing with the vendor. You have to just tell him, sir, first thing, we are not charging anything. Second, whenever we will charge, we would have given you sale. If you want to use us as a tool, use us. Else, there is no harm in getting into Global Gardeners vendors ecosystem. Okay, sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Look forward, sir. Thank you. Yeah. Next is Mr. KB Chaitri. Please unmute yourself. सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैंने 25 तारीख को एक बंदा को बिल बना दिया था। उसने कहा कि हमें यूपीवी चाहिए, इसीलिए एक बिल बना दिया था, लेकिन उसका फीफो में था, हमें वो पता नहीं चला। मेरे भाई, आज हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हम उसकी बात कर मैंने रहे हैं। टिकट तो राइज किया है अभी तक वही। जी सर, वो आप किसी और फोरम में बात करिएगा या अमित सर से बात कर लीजिएगा, वो आपका क्वेरी सॉल्व कर देंगे। लेट्स फोकस ऑन ओनली प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस। ठीक है सर, थैंक यू। Next is Mr. Jitendra. Please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। या हाय, गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन सर कुछ अजीब टाइप का है। सर, मैं ईपोस का प्रोस्पेक्टिंग किया हुआ हूँ और उससे रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है।
जी इसको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कैसे इसको क्लियर करूँ। जी, बताइए बताइए। सर क्वेश्चन मेरे पास ये है बंदे ने कि ये आपका जो यूपोस है तो ये ग्लोबल गार्डनर से रिलेटेड है, और ग्लोबल गार्डनर जो है कि यदि यूपोस हम जो रखे हुए डिजिटल मॉल के रूप में, और ये किसी दिन हमें सर्विस नहीं दे या फिर मैं नहीं कर पाऊँ इस यूपोस का यूज, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? तब तो फिर मेरा पैसा जो मैंने 75,000 दे रहा हूँ या लगा रहा हूँ, इसका बेनिफिट मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो इसलिए दोस्त सर को ये मैंने इसको सारा पूछिएगा कि भाई उसने गाड़ी ली और उसने नहीं चलाई, इसमें कंपनी की क्या गलती है? जी अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? आपने मुझसे गाड़ी खरीद ली और गाड़ी आप चला नहीं रहे हैं, अब आप पूछ रहे हैं उस गाड़ी का क्या होगा, तो मैं उसका क्या जवाब दूं? ये तो बात मैं बस सही है यही सर। एडवाइस कर सकता हूँ, भाई गाड़ी में सेल्फ लगाओ और चलाओ। अच्छा सर। चलिए, वैसे आपने अपने सवाल को खुद ही सस्पेक्ट में डाल दिया था, आपको पता था आप क्या पूछने वाले हैं। चलिए, सर थैंक यू। सर ये इसलिए सर मैं ऐसा पूछा क्योंकि सर ये ऐसा लगता है कि ये सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है, तो हम ये सवाल इसका का जवाब जवाब किसी के पास नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास भी नहीं है, क्योंकि आपने कोई चीज ले ली और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे? जी ये तो वो बात हो गई, मैं गाड़ी खरीदूं और मैं चलाऊं ना, तो बताओ क्या होगा? तो उसका जवाब सर किसी के उसके पास नहीं उसके होगा। तरफ से सर उसके तरफ से सर सवाल ये तो था ही, बट उसका मेन व्यू था सर बोलने का कि यदि मैं इस कंपनी का ले भी लूँ पोस्ट, और मान लीजिए इन फ्यूचर ये सर्विस देना बंद कर दे, यानी कंपनी अपना सर्विस यूपोस का देना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? सवाल उसका ये था सर। देखिए, एक चीज समझिए पहले तो, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल, खैर अब आपका मैं बताऊं, सच में बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे प्रोस्पेक्ट से बहुत दूर रहिए, जी ये मेरा एडवाइस है आपको, क्योंकि ये क्या है, आपका केवल टाइम किल करेंगे। ये वो लोग हैं जो एक अपनी अदृश्य दुनिया में रहते हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, कल को सूरज नहीं निकला तो क्या होगा, कल को हवा बंद हो गई तो हम सांस कैसे लेंगे। तो अब इन ब्रह्म सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, कंपनियां बंद तो एम्बेसडर बनाने वाली भी हो गई, और सरकारें भी चली उड़ जाती हैं रातों रात, ठीक है ना। तो गारंटी तो खैर किसी चीज की दुनिया में नहीं है, बट हमेशा हमें ये पॉइंट सोचने चाहिए कि भाई किस वजह से क्या हो सकता है। उन्होंने बहुत सारे मोबाइल भी खरीदे होंगे, ऑपरेटर भी खरीदे होंगे, वो हर महीने बिल भी भरते होंगे। अब वो ये सोचने लगे कि यार ये कंपनी, आज मैंने सैमसंग मोबाइल खरीदा और कल को ये सैमसंग मोबाइल कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। अब इस ब्रह्म सवाल का किसी के पास जवाब नहीं है। मर गया आदमी, मर गया, उसकी अर्थी उठाइए और घर के छोड़ के आ जाइए, खत्म। तो इसलिए ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, ये प्रोस्पेक्टिंग करने लायक नहीं। आपकी प्रोस्पेक्टिंग में ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रणाम करिए, पैर छुइए और उनके वहां से निकल लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ एडवाइस नहीं कर सकता। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक जी। यू। Mr. Murli, please unmute yourself. या गुड मॉर्निंग अमित सिंह, जी विकास सर। जी। ये प्रोस्पेक्टिंग में रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट ओनर्स को कैसे इसको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं एज ए वेंडर के रूप में? रियल स्टेट ओनर आपको आराम से वो आपके वेंडर बन जाएंगे, बिकॉज एनीवेज रियल स्टेट पूरा इंसेंटिव बेस्ड मॉडल ही है। वो ब्रोकर्स को 2%, 3%, 5% देते ही देते हैं। हाँ तो हाँ, आप उनको इजीली वेंडर बना सकते हो। आप उनको जाके बोलो भैया वो जितना कमीशन देते हैं पहले आपको उतना देने लगे, आप जब उनकी सेल ज्यादा करोगे तो आप रीनेगोशिएट कर लो कमीशन। बिकॉज एज ए वेंडर वी हैव टू पे मिनिमम 5% ना सर, नहीं नहीं, ऑन ऐसा कोई सेल। जरूरी नहीं है, जितना कमीशन दे रहे हैं उसी रेशियो में हम कैशबैक दे देंगे। लेट से हम अच्छा 5% में 100% देते हैं, वो 1% देंगे तो हम 20% कैशबैक दे देंगे। अच्छा, ओके ओके, उसी हिसाब थैंक से यू, हम उसको रेगुलेट कर देंगे ना। थैंक यू। जी। Next is Mr. Rajesh Panchal. Please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मुझे जानना था कि हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इसके अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, हो गए गैरेजेस हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए, ये सारे जो है उनको डायरेक्ट कस्टमर से बात करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, या वो नहीं करेंगे, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे वो बात करते हैं। तो उनको अगर समझाना है, जैसे कि पेट्रोल पंप के जो ऑनर्स होते हैं वो तो बैक साइड में बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स आएंगे उनको कन्विंस करने के लिए वो टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि वो पेट्रोल फिल कराएंगे, डीजल फिल कराएंगे तो चले जाएंगे। तो क्या कटआउट्स वगैरह कुछ रख के
उनको गाइड करके कुछ कर सकते हैं? ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल वही कर सकते हैं। और फिर वही मैं बोलूंगा, पेट्रोल पंप मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, बिकॉज जो आपने प्रॉब्लम बोली वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ। हम एचपी के साथ एक डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमें ये सब डेक मिल जाएगा, बट पेट्रोल पंप ओनर्स मेरे लिए गुड प्रोस्पेक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। हाँ, आईएसपी मेरे लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, केबल ऑपरेटर मेरे लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इंश्योरेंस एजेंट मेरे लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि वो एनीवेज कस्टमर को हर महीने कन्विंस करते हैं। सर अभी उनको तो कन्विंस करने के लिए अपने पास कुछ टीजर वीडियोस वगैरह कुछ है क्या सब है, अवेलेबल? भर भर के हैं। स्टार्टअप किट खोलिए, उसमें सारी चीजें हैं, 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक के अलग अलग वीडियोस हैं। आपके ऐप को ही खोलेंगे, उसमें यूजर बेनिफिट, वेंडर बेनिफिट सब कुछ दिया हुआ है, यूपॉस बेनिफिट, उन सबके छोटे छोटे वीडियोस हैं और स्पेसिफिक वीडियो हैं। जैसे आप यूजर बेनिफिट का वीडियो खोलेंगे तो 18 मिनट में सारे पूरी बात हो जाती है। ओके, तो इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो अपने तो एडवर्टाइजिंग में वो सब टीजर भेजना है, भेज सकते हैं। ओके। और ये गैरेजेस वाले को कैसे वो करना होगा? गैरेजेस का आपने अभी जो डिस्कशन में हुआ बात, गैरेज वाले उनको को वेंडर बना दीजिए ग्लोबल गार्नर में, दैट्स इट। अपनी सर्विसेज में कैशबैक देंगे तो अपने आप दूसरी चीजों का कैशबैक लोग लेने के लिए आएंगे। ओके। जो खुद वेंडर है उसके लिए तो बहुत आसान है किसी को भी कंज्यूमर बनाना, क्योंकि वो सिंपल बोलेगा ना कि भाई मेरी सर्विसेज में मैं आपको कैशबैक दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आपने उसको यहीं पे एंगेज करके पकड़ लिया। उसके बाद आप उसको क्रॉस सेल शुरू कर दीजिए कि भाई जैसे मैंने मेरी गैरेज सर्विसेज पे दिया है, मैं आपको बिग बास्केट पे भी दे सकता हूँ, मैं आपको जोमेटो पे भी दे सकता हूँ, मैं आपको कल्याण ज्वेलर्स पे भी दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसे 20 करोड़ प्रोडक्ट पे दे सकता हूँ। अब वो कस्टमर एंगेज हो गया और बार बार री एक्टिविटीज हो रही है उसके साथ। राइट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, सब लोगों को बताया, वीडियोस भेजे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया वो नहीं पता चलता। वो कैसे पता चलेगा? वो क्योंकि आप मास मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, 5 लोगों से आप डेली बात करिए। जब आप बात करेंगे ना तो आपको उनका रिजल्ट, उनका फीलिंग्स, उन क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। आज जैसे मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, मैं सुबह बैठ के डेली 200 लोगों से बात कर रहा हूँ, उनमें से 5 लोग मान लीजिए मुझे रिवर्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि यार 5 लोग तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे तब आउटपुट पता चल रहा है। मैं मान लीजिए मैं जनरल एक वीडियो सुबह बनाऊं और मैं भेज दूं, अब मुझे वो पता ही नहीं चलता है लोगों ने पूरा देखा, आधा देखा, कितने। जैसे हमने मीटिंग शुरू करी तो हमने 180 लोगों से शुरू करी, वो 210 तक गया, हम एंड तक 210 पे रहे, इस समय हम 150 पे पहुंच गए। अब मुझे हर मिनट पता चल रहा है कौन सी बातों पे लोग एंगेज हैं, कौन सी बातों पे डिसएंगेज हो रहे हैं, मुझे सारी चीजें पता चल रही हैं। तो जिन चीजों में मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है मैं उन चीजों को ज्यादा करूंगा। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से पता चलता है कि क्या स्टेटस है आपका। जैसे मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा कम से कम 50-60 लोग कम होने चाहिए थे, उल्टा ये पहली बार मैं देख रहा हूं ऐसा हुआ कि कल 180 थे, आज 200 के ऊपर चले गए। करेक्ट, तो मुझे एंगेजमेंट इससे पता चलता है। जी, थैंक यू। थैंक यू। Sir, we are done with the question. Okay, thank you everyone. I think it was a good motivation for me also to see number increasing, not falling down, and hope we continue doing this. Next 4 days will be more interactive, more on how we are going to talk in public. अब हम स्क्रिप्टिंग पे आएंगे परसों से। कल वी विल टॉक अबाउट आवर स्टार्टअप किट, कि हमारी स्टार्टअप किट में क्या क्या कंटेंट है। आई विल टॉक ऑन वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच इज स्टार्टअप किट, राइट? थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।